पे लिंक मिल जाएगा ना तो आई विल जस्ट शेयर द लिंक सो इट विल बिकम इजियर। मैं ना डर लगता है कि कर दें लोगों को। हाँ हाँ आदित्य आ गया यार, एडमिट कर देते हैं उसको, उनसे कुछ पूछना है पूछ लो। Hello everyone. Hi. Namaste ma'am. Hello. Hi Aditya, how are you? Hello ma'am. I'm okay, thank you. Hope you are okay. Yeah, we are doing Hey good. Aditya, welcome. Hi Brenda. welcome. आदित्य जी, इंश्योरेंस के बारे में क्या बात करेंगे आप? हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस में ना सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। एक तो सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि इंश्योरेंस मिलता नहीं है। ओके, सो लोग अप्लाई भी नहीं करते। सो देयर आर फ्यू प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो देती हैं आपका इंश्योरेंस, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेरेंट्स जाते हैं, वो पहले ही जाके बोल देते हैं हमारा बच्चा तो डाउन सिंड्रोम है, आप लोग देते हो कि नहीं देते हो। सो वो एजेंट होता है, हर एजेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस पता हो जरूरी भी नहीं होता है। तो वो उन्हें बोल देते मना कर देता। तो मैंने कई पेरेंट्स को बोला आप जाके उनसे बोलो ठीक है अपनी गाइडलाइंस तो लेके आओ, गाइडलाइंस चेक करो। हर एजेंट को सारी चीजें पता हो जरूरी नहीं होता है, बिकॉज इंश्योरेंस मिलता है। आप अगर उसको डायरेक्टली जाके बोल दोगे हाँ ये भी प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम है, तो वो मना कर देता है। बट अगेन उसकी गलती, क्योंकि उसको भी चीजें नहीं पता है, दे आर नॉट ट्रेन्ड। उनका काम तो होता है कि जिस पेरेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवाना इंश्योरेंस के लिए, वो एंड आस्क एंड रीड द गाइडलाइंस, बोलो कि कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है कि आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, राइट। क्योंकि कई पेरेंट्स उन्होंने अवेल भी किया है। एंड एक चीज होती है, गवर्नमेंट का तो निरामया ही है, ओके, यूज ही नहीं होता है। आप लोग एक तरफ बोलते हैं कि इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। देखो गवर्नमेंट भी है, सो वो भी तो देखती है ना कि ये कोई चीज कितनी यूटिलाइज हो रही है। आज आपका जो ये आपका टॉक शो रहता है every day, right? So if nobody is coming, only the hosts are there, few people are there, so why we are going to run this? अगर ऑडियंस नहीं होगा तो सो द लाइक वेज की जैसे हमारे स्टेट से कभी कोई जाते नहीं, हार्डली गिनती के नंबर जाते हैं, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। तो अगर आपके पास इतने सारे लोग हैं तो वो लोग क्यों अपील नहीं करते हैं? और चैलेंजेस आते हैं तो वो कंसर्न रेज करो क्या रहे हैं। और सेकंड आपका ये है कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी है जिसमें Can we let them in? Sorry, I'm so sorry, Parul, because we are running late. मुझे एक बात बताइए आप उससे पहले, जैसे आदित्य बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर जब हम खोलेंगे तो दोनों के लिए क्वेश्चन आंसर खुल रहा है। जो थोड़ा सा ब्रीफ देना है आदित्य जी को इंश्योरेंस का, वो तो पहले देंगे। हाँ, see, first he will talk. पहले आदित्य ही बात करेंगे generally about what he is going to talk about today and what doubts people can ask him. See, the thing is, आज लोग आके आदित्य से adoption के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, so it is better Aditya just gives an overview of what is question answer start हो गई UDID के, then I think I will ask Aditya that Aditya, one more concern we face in our children, like for getting insurance for them. So we would like to know that did you do it for Avnish and what was the procedure? What did you follow? So that way you can come to. So it gives them a little time to give a general review and then correct. See, I want Aditya to give a general overview first, not for anything, because लोगों को like Parul you asked, no, सच में सबको confusion होता है। किसी को like Aditya was saying, swear there are so many provisions available, none of us are using it. Not that is, yes. They are not using it because they don't know it. Frankly, किसी की गलती इसलिए है कि मालूम नहीं होता। हाँ, तो Aditya will have to start there. ठीक है? चलो, I'm just letting everyone in. UDID का quickly पूछेंगे फिर first. Yeah, start with UDID and then we'll move to. Yeah. I've just admitted everyone. ठीक है? Yes, fine. I thought क्या 4 ही लोग हैं? नहीं, आपको मैंने वो नहीं बनाया यार, co-host नहीं बनाया, sorry. Okay, yeah. नहीं, बनाना better है in case he wants to show something, no? Share करना पड़ेगा, yes. Yeah, he is co-host. Brenda ji. Now you can see more people, Aditya. Yeah. No problem. So they are joining now. Shall we start? Yeah, please start, yeah. नमस्ते, मैं पारुल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे UDID पे और इंश्योरेंस पॉलिसीज पे। लास्ट टाइम जो हमारा सेशन था आदित्य तिवारी जी के साथ, आप सबको याद होगा कि आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भी आपके थे और कुछ सवाल रह भी गए थे, तो हम उन सवालों को भी आज लेंगे। UDID के बारे में एक ब्रीफ सा फिर से हम इंट्रोडक्शन लेंगे आदित्य जी से कि क्या वो है, क्यों बनवाना चाहिए, क्या उसका इस्तेमाल है और क्या उसके फायदे हैं।
दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, वो क्यों हमें लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, एक है गवर्नमेंट का जो निर्णय है, उसके अलावा और क्या है, कैसे लिया जा सकता है। बहुत ज्यादातर पेरेंट्स का ये कहना होता है कि हमें मिल ही नहीं रहा है, एजेंट ने मना कर दिया है। तो क्या है ये सारी चीजें और कैसे हम इन सब पे काम कर सकते हैं और अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, फायदे ढूंढ सकते हैं इन सब चीजों में। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी साथी समीक्षा को इनवाइट करती हूँ कि वो आदित्य जी को बुलाएं। समीक्षा। Yeah. Good evening, everyone. I hope I am audible. जी, Sami. Yeah. Good evening, everyone, and welcome to today's session. And first thing, we would like to inform that today we are not able to do the Facebook Live with some technical problems, but we are live on YouTube. So, and then we are welcoming again and talking to Aditya, those who are joining for the first time and was not there with us in the previous session. He's a TED speaker. He's a social reformer, adoptive. He is the youngest single dad of child with the Down syndrome, and a lot of things you will find when you will just look for him in social media. And yes, not taking much of the time, we will first like to know a quick brief about how to go and apply for UDID. Aditya, welcome. We would request you to start with a journal view for the UDID, like a general information, short information for all the parents, or how to go about sure. So language is not constant, right? we can go with the English mix, whatever way the questions come. Yeah. Okay, done. So this is for UDID. This is a unique disability ID. It's a new concept that same like an Aadhaar card. So there will be a one ID for person with a special need, and that can be used going forward. So to get the UDID, everybody must have the disability certificate first thing, and there are two ways how you can get the UDID created. One, from where you are get the disability certificate. So by default, the district hospitals, they are also applying on behalf of the parents. Only thing is that the process is slow, because see, they have a huge number of people. काफ़ी सारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होते हैं, सो वो कभी कभी प्रोसेस टाइम भी लेता है, एंड इनफैक्ट करेक्शन के भी बहुत सारे केसेस आते हैं. सो इट्स बेटर अगर आपके बच्चे के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है. सो मैंने एक चैट बॉक्स में एक लिंक पिंक किया है, swalombancard.gov.in. आप इस वेबसाइट पे जाके यू कैन क्रिएट अ रिक्वेस्ट फॉर द UDID एज वेल. सो दैट इज वन थिंग. ओके, और इनफैक्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप UDID खुद ही अब बच्चे का जाके अप्लाई करें, बिकॉज उसमें चांसेस कम होंगे आपके गलती करने के. बिकॉज इनफैक्ट जो इन्फॉर्मेशन आप बच्चे का इनपुट करते हैं, और यू कैन प्रोवाइड ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन सही डाल सकते हैं. ब्लड ग्रुप है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, जेंडर है, कौन सा स्पेशल नीड है, परसेंटेज कितना है. बिकॉज जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में लोग हैं वो इतना डेडिकेटेडली काम नहीं करते, उनके लिए जैसे वन ऑफ द जॉब होता है, और उनकी गलती के कारण हम लोगों को काफ़ी इश्यूज फेस करने होते हैं. अगर कुछ उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया तो उसको फिर से जाके करेक्ट कराओ, अमेंड कराओ, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. इनफैक्ट UDID कोई क्रिएट होने में 3 to 6 months लग जाता है. सो आप खुद कर सकते हैं. एंड बेनिफिट इट्स की देखिए, अब स्लोली अवेयरनेस बढ़ रही है. देर आर काफ़ी ऑप्शंस हमारे बच्चों के लिए ओपन हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, in terms of other activities. In fact, agar aap apne bachche ko athlete, if you want to make an athlete to your child, so you need a disability certificate, you need a UDID card, right? So that is the right of our child. So get it done, and if any issues, so just let us know. And ideally the process sabka same hota hai. There may be 1 or 2 document which is required additional, that is based on state to state. So a few state have Samagra ID, few state have different ID in Telangana. So likewise, otherwise the documents are same. You must have the birth certificate, you must have the diagnosis report, you must have the Aadhaar number, right? And on the basis of that you can get the disabilities. And for disability certificate you need a IQ certificate as well. So agar bachche ka age is 0 to 5 hai, so DQ certificate ke basis pe you will get the IQ certificate. And initially, after Right of Person with Disability Act 2016, before that until the age of 6 कभी किसी को भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं था, दो इट्स अ डाउन सिंड्रोम और इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट्स अ बर्थ डिफेक्ट. Okay, after raising these concerns, and there was a changes made in Right of Person with Disability Act. So now immediately afterwards, when the special need diagnosis hota hai and बच्चे को, so immediately you can get the disability certificate.
and but that will be for the 5 years, and that you can renew it. Okay, so 5 years बाद वो रिन्यू हो जाता है. बट UDID जो कार्ड होता है, दैट इज अ परमानेंट कार्ड, सेम एज आधार कार्ड. सो आधार कार्ड आपका जो नंबर होता है, आधार नंबर, सो दैट इज ऑलवेज परमानेंट. उसमें मल्टीपल टाइम्स आप आपका फोन नंबर अपडेट कर सकते हो, एड्रेस अपडेट कर सकते हो, राइट. इनफैक्ट बच्चों का तो फोटो बायोमेट्रिक का चीजें, बायोमेट्रिक भी अपडेट होता है. सो बट दी आधार नंबर इज सेम, सो द सेम एज द UDID. और इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, इतना टाइम लग गया, नहीं मिल रहा है, नहीं हो पा रहा है. सो ऑफ कोर्स देयर आर गैप्स इन द सिस्टम. ओके, बट आप बट एवरी स्टेट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं. देयर इज अ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, सामाजिक कल्याण विभाग होता है आपके कलेक्टर ऑफिस में. सो दीज आर द 2-3 प्लेसेस जहाँ पे यू कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन. इनफैक्ट अगर आपको कई जगह तो वो लोग सर्कुलर गेट्स पे लगा देते हैं, तो यू कैन रीड दो सर्कुलर्स एज वेल, एंड आप अकॉर्डिंगली यू कैन रिएक्ट. सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहता है, डेट्स रहता है, सारे डॉक्टर्स एवरी डे दे आर नॉट वर्किंग. सो कुछ स्पेसिफिक डेज रहते हैं, मंडे या फ्राइडे, इस टाइप का उनके कुछ लाइक ये पॉइंटर्स होते हैं, तो यू नीड टू जस्ट कीप इन माइंड. और इससे जैसा कि आपने लास्ट टाइम बताया था, स्वावलंबन जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं UDID कार्ड के लिए. करेक्ट. और हमें एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक बहुत ही आसान सा होता है जिसमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती है और हम अप्लाई कर देते हैं. एब्सोल्युटली राइट. इनफैक्ट आपको चाहिए तो आई कैन ओपन मेरा शेयर स्क्रीन एक बार शेयर करता हूं. अगर जो पेरेंट्स नए हैं उन्हें हम ये दिखा देते हैं, उसके बाद हम राइट. और सेम लिंक मैंने आपका इसमें भी चैट बॉक्स में भी आई हैव पिंग द सेम लिंक. सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक. फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है जिसका लिंक आदित्य जी ने चैट बॉक्स में भी दिया है, जहां पर आपको UDID सर्टिफिकेट के लिए, कार्ड के लिए अप्लाई करना है. So this is the Swalambhan link, and this will be used swalambhan.gov. Apply for disability certificate and UDID card. Yeah. Okay, apply for UDID card or disability and renewal, loss of a UDID cards. Okay, track your application status, download e-disability certificate and e-UDID card, update personal information. So these options are available. इनफैक्ट इतने पेरेंट्स से मैंने बात किया, सो मेन प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन वी आइडेंटिफाई कि बच्चे को मेडिकल कंडीशन है, डाउन सिंड्रोम है, सो वी स्टॉप यूजिंग आवर ब्रेन्स, वी स्टॉप एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस. ओके, आप सिंपल जाइए इंटरनेट पे डालिए UDID कार्ड. इनफैक्ट आप UDID डालेंगे तो UDID कार्ड डालेंगे, सेम इंफॉर्मेशन यू विल गेट. स्वावलंबन की वेबसाइट आएगा, सिंपल, राइट, फर्स्ट सेकंड में आ जाएगा आपका. सो थोड़ा एक्सप्लोर भी करना चाहिए. नाउ देखो, मेडिकल कंडीशन बच्चे को है, पेरेंट को नहीं है, राइट. सो वी मस्ट यूज आवर ब्रेन्स, वी मस्ट टू पुट एफर्ट्स, राइट, कि क्या चीजें हो सकती है, कैसे अप्लाई करना है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अदर्स, बिकॉज कोई भी इंसान आपकी मदद नहीं करेगा until unless you don't help yourself, right. So apply for disability ID card. एनरोलमेंट नंबर आपको मिलेगा जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में होगा आपके. सॉरी, मैंने रिन्यूअल पे क्लिक किया. ये अप्लाई फॉर दिस, या करेक्ट. सो ये बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमें क्या डाउट होगा, यू हैव टू पुट योर इन्फॉर्मेशन हियर. ओके, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर है, फोन नंबर है, एंड देन यू नीड टू अपलोड द फोटो हियर, सिग्नेचर हियर. Okay, contact number of guardian if in case of guardian. You need to upload it, address, correspondence. Okay, if required, maybe some document it will ask. So that's it. And once you fill this form, submit it. जो भी information इसके अंदर required है, you have to fill that. And just follow the instruction mentioned here. In fact, ये easy way है, and थोड़ा time लगेगा. You just need the basic documents. Photo है, disability certificate है, आधार number है, address proof है. वो भी यही अपलोड हो जाएंगे. Yeah, right. So it will be uploaded here. I understand what Aditya is saying, that please do it. UDID is a very important document for our child. In fact, he has also last time also suggested, and today also he's mentioned, every iCard, which is every card which is centrally given, like Aadhaar card and PAN card and other requirements, like for having a bank account. One of the parent also asked that bank account should be in just the government bank or the any bank will do. I think for that matter, Aditya, any bank should do. No, bank account. See,
Of course, we have so many banks, and in fact, whatever is comfortable, which is nearby you, which is easily accessible, that is all. That is important, right? For the bank account, it's not. आज हम लेकिन उस पे बात नहीं कर रहे हैं, टाइम फिर निकल जाएगा, उस पे बात करेंगे। तो अभी पेरेंट्स ये यूडीआईडी के बारे में बता दिया है आदित्य जी ने। अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इंश्योरेंस के बारे में, और बाकी आपके जो भी यूडीआईडी के या इंश्योरेंस के बारे में सवाल होंगे तो एक बार क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करेंगे, तब आप पूछ लीजिएगा। आदित्य, जैसे मैंने बात की आपसे इंश्योरेंस के बारे में, तो उसमें बहुत एक वो पहले से ही, हम जैसे कि आपसे बात हो रही थी तो आपने बोला कि पहले से ही पेरेंट्स को हेजिटेशन होता है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अवेल कर भी लिया तो कैसे उसे यूज करें। इंश्योरेंस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम स्वावलंबन वेबसाइट, मैं पेरेंट्स को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि प्लीज ऑल्सो एक्सप्लोर द नेशनल ट्रस्ट वेबसाइट। So that is also important because ultimately National Trust is also working for the right of person with a special need, right? And there are a few things like the guardianship agreement, like the a renewal of the Niramaya insurance policy, you will find here in the National Trust website. I will ping in the chat as well. Ab dekhiye, insurance is another concern for the people ki फर्स्ट चीज तो है कि देयर आर फ्यू दे हैव एक्सेप्टेड इट जस्ट बिकॉज कि बच्चे स्पेशल नीड है, मेडिकल कंडीशन है, तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, तो ये गलत होता है। इंश्योरेंस थिंग्स आर अवेलेबल, you need to talk it, and private, there are few private companies easily they are giving, United India, Star, and there were few more, they are giving the insurance। कई पेरेंट्स उन्होंने क्लेम भी किया है। First, second thing is there is a corporate insurance is always there if you are working in corporate, so you don't have to submit any document that anyone have any special needs or in your family or not. Simple, you just have to put the name, register your child at the additional dependent name, and it is covered by default, it is covered. And the third is the government scheme. So government schemes, there is only one, that is Niramaya. Now Niramaya is the only scheme where वो जो 1 lakh का कवर होता है, out of that they have distributed, I believe 60,000 is for the hospitalization, and rest 40,000 is for your therapies as well. So therapies are also covered. Then when you go for a therapy, the transportation cost is also covered. Okay, so Niramaya is also there, and now we are working on it. We will raise this concern to increase that amount, so from 1 lakh to 3 lakh or 5 lakh rupees. But the point is there are a very less number of people who are claiming those Niramaya schemes from the government. So we don't have a high number of claims. So until unless we don't have a claim, so why the government will put extra money for the insurance? So in fact, until unless you don't have a disability certificate, हम बच्चों के लेते नहीं हैं. We have a huge number of people who have special needs, Down syndrome, but we are not taking a disability certificate. So how the government know how the facilities to be created for them? So that is another challenge. But yeah, आदित्य जी, एज क्या होगा? कोई एज बार है इसकी? There is no age bar. See, there is no age bar for insurance. For the insurance, there are, see, insurance is a one part where they also work, they also run business for money. They also have to sustain this, and we need to understand. In fact, forget about insurance for a child with a Down syndrome or people with Down syndrome. Even if it's required for us, when we got hospitalized, it's a zero claim, a paperless insurance. But when you claim for it, so you can see there are a few things that which are not covered as a part of insurance. Right? Insurance company हमारी मदद करने के लिए नहीं है, वो अपना business चलाने के लिए है. So if you believe कि yes, वो हमें 100% cover मिलेगा, so how they will run? नमस्ते जी, 1 मिनट. हेलो, नमस्ते जी. वो तो इंश्योरेंस है ना, वो तो ओपीडी में ओपीडी बिल दे दिया तो थोड़ा सा ही मिल रहा है. 1 साल में 8,000 ही मिल रहा है. वो तो हमारा मेडिसिन बिल बहुत ज्यादा है, उसके लिए वो ज्यादा किया तो अच्छा लगेगा ना. राइट, सो अगेन मेडिसिन का कवर नहीं होता है. वही, वो तो मेडिसिन बिल ही ज्यादा है हमारा. तो मेरा बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, उसको मेडिसिन बहुत देना पड़ रहा है. 1 महीने में 4,000 हो रहा है, इसलिए वो तो बहुत महंगा, तो मुश्किल पड़ रहा है ना. इंश्योरेंस हो तो 8,000 ही मिल रहा है वो तो 1 साल में. करेक्ट. सो देयर इज अ कैप है उसके ऊपर, and it needs to be increased.
एंड वन मोर थिंग, सर्टिफिकेट लेने के लिए दो जाना है तो बच्चे को लेकर जाना मुश्किल पड़ रहा है, एक जगह में वो नहीं मिल रहा है और बच्चा वो पैदल नहीं जा रहा है, उसको मेंटली रिटार्डेड पे उसको लेकर जाना मुश्किल पड़ रहा है, उसको वेट भी ज्यादा है, बहुत दूर भी जाना पड़ रहा है, वो स्टेयरकेस भी ऊपर जाना पड़ रहा है। Uma, please clarify what is your question. We are discussing insurance right now, where we are discussing for the parents who have just not applied or don't feel any need or they are not aware about the schemes. So okay, one more thing. That's what I'm saying, ma'am. What is your question to Aditya? No, wait. Okay, Uma, so do one thing. आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। सो अगर आपके बच्चे का ये लिमिटेशंस है कि ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं ये कंडीशन के लिए, तो देयर आर ऑप्शंस। ओके, आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं आपके कलेक्टर ऑफिस में, टू द कलेक्टर, दैट बच्चे का आप फोटो भी डालिएगा और आपका जो प्रिस्क्रिप्शन डेफिनेटली डॉक्टर के पास होगा, डॉक्टर ने आपने कहीं टेस्ट कराया होगा तो वो ऐड करिएगा, और इफ रिक्वायर्ड यू कैन, आप मोबाइल में अपना बच्चे का वीडियो बना के ले जाना। Do we need to know that from which state Uma is, or it is general knowledge? Karnataka. Okay. Karnataka, Bangalore. Okay, so वो आप करिएगा एक बार, so he will help you. Okay. Because see, there are these officers and they really help in such conditions. Okay. Okay. Hello, sir. जी सर, गुड इवनिंग सर। जी हम बस क्वेश्चन आंसर अभी समीक्षा शुरू ही कर लेते हैं क्योंकि उसी में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मैं देख पा रही हूँ रेखा माँ यहाँ पर हैं, डॉक्टर रेखा रामाचंद्रन DSFI की हमारी प्रेसिडेंट है। माँ आपका स्वागत है बहुत बहुत। और आपने जैसे देखा ही होगा UDID एंड इंश्योरेंस पे आज आदित्य जी हमें थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी वो आए थे। आप कुछ कहना चाहेंगे माँ? हेलो आदित्य, there are people who cannot afford the medical coverage. Please ask them to write to DSFI. Give them our address. We have got companies that are ready to cover them. So please write to us. Perfect. Will do. So tell those parents, depending only if it is a child with Down syndrome, do we cover it? Okay. Got it. I don't know what they meant when they said mentally retarded. ये word use ही नहीं होता है. We don't. Correct. So what is the classification they are under? Which village, which part of Karnataka, ma'am? Uma, would you like to share? Bangalore में urban हो तो Bangalore, JP Nagar, Bangalore. So then you should write to us. Please write to us, and we will. You must have come in the Bangalore Humsafar. Yes, ma'am. You're in the Bangalore Humsafar, right? Yes, so ma'am. Please call us up. Brinda is there. I am there. You write to us. We'll tell you the procedure till we are able to show you that we can get you complete insurance. I think Aditya is trying very hard to get all of us insurance. Yeah. And one thing, we have to give him a lot of credit at his age to be working so hard for the cause. Actually, so yes, till then the federation can support you. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Parul, can you put up the phone number of Brinda and so that we can have? जी मैं लिख देती हूँ। Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. ठीक है? Yeah. Thank you. आदित्य जी, इस पे बात करने के लिए मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपने बात की थेरेपी की, तो क्या थेरेपी जैसे फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी के लिए हम बच्चों को लेके जाते हैं तो वो भी इंश्योरेंस में कवर हो जाता है? प्राइवेट में नहीं होता, निरामया में ही ओनली ऑप्शन है ये। अच्छा। और वो भी आई बिलीव 30-40,000 का ही है मैक्सिमम जो आप लेके जाते हैं। जी जी जी। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो डॉक्यूमेंट ये होगा, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन की बच्चे को थेरेपी कंटिन्यू करना है, कौन सा थेरेपी चाहिए, पीडियाट्रिशियन आपको लिख के दे देंगे, ये डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन अगर होता है तो बेस्ट है। और उसके बाद जो बिल्स हैं प्रॉपर सील करे, वो सील, सिग्नेचर, साइन एंड इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा बहुत अमाउंट 1-2 हज़ार रुपए मिलता है अगर आप वो ट्रैवल कर रहे हैं और प्रॉपर बिल आपके पास है तो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको एक रेफर किया हुआ पेपर चाहिए डॉक्टर का कि वो रेफर किया गया है फिजियोथेरेपिस्ट को या स्पीच थेरेपिस्ट को, एंड देन वहाँ की बिल। करेक्ट। सी देखिए, हमें पता है लेकिन सामने वाले को नहीं पता है। इंश्योरेंस इज अ कंपनी, राइट? सो हर जगह एक प्रोटोकॉल्स होता है, लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है। सो अगर वो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू गेट आपका जो आपको पैसा चाहिए क्लेम करना है, इट विल हेल्प।
ठीक है समीक्षा जी, अब हम सवाल ले सकते हैं। Yeah, I think we can go for the question and I will ask जो सब क्या ये इसका कवर होता है फिजियोथेरेपी? Yeah, please we'll take the names. Those only ask questions. Otherwise, it will go very random. Please raise your hand. हाँ जी आदित्य, please add this. I believe there is no minimum age for it. It's just a disability certificate you need. So definitely you can apply for insurance scheme, and then after you can submit it once you have the policy. Yeah. So I would request Parag ji to unmute and ask the question, please. हेलो आदित्य जी। हेलो। मैं राजकोट गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मेरा सन डाउन सिंड्रोम है। लास्ट टाइम अपने अच्छी तरह से बात हुई थी, लेकिन अभी इंश्योरेंस के रिगार्डिंग मेरा अभी फैमिली इंश्योरेंस अभी था, तो मैंने अभी लास्ट मंथ ही मेरे सन को मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी से रिमूव मुझे करवाना पड़ा, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। टाटा AIG, फिर बजाज अलियांज और भी 2-3 कंपनी में मैंने इंक्वायरी की, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ओके, बट क्या रीजन क्या उनका? आपको उन्होंने रीजन कुछ मेंशन किया कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? क्या रीजन है? नहीं, वो मेंशन यही बोल रहे हैं कि डिसेबिलिटी डाउन सिंड्रोम वाले जो केस है वो लोग वो केस हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। Okay. Apart from that, देखिए, I will also try offline with this company, but उसके अलावा मैं आपको कुछ इंश्योरेंस कंपनी देता हूँ। वृंदा, I can forward you, आपको फॉरवर्ड करिएगा। So जैसे स्टार हॉस्पिटल है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। I have identified 5-6 companies. Okay. तो वो कंपनी में इंश्योरेंस मिल जाता है और कई पेरेंट्स ने क्लेम भी किया है। अपार्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, तो आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस नहीं है क्या? नहीं, मतलब कॉर्पोरेट मतलब एक्चुअली। अच्छा, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस है आपका? नहीं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सो वो मिल जाएगा। आई कैन शेयर द लिस्ट ऑफ 5-6 जिनसे हमने बात किया है, एंड वो इंक्लूडेड है इंश्योरेंस में। मैं जस्ट कोई फाइंड करने का कोशिश कर रहा हूँ। सो वृंदा कैन शेयर इन द चैट बॉक्स। सो अवेलेबल है, मुझे भेज दीजिएगा आप। आदित्य जी मुझे भेज दीजिए जी। और आदित्य जी, एक बात उसमें मेंशन की गई थी कि हम लोग इसमें सन को कवर करेंगे, और कॉज ऑफ कंसर्न अगर डाउन सिंड्रोम हुआ, कोई भी मेडिकल सिचुएशन आई और उसका कॉज ऑफ कंसर्न डाउन सिंड्रोम हुआ, तो हम लोग उसका कवर नहीं कर पाएंगे, वैसा बताया था। एक पॉइंट था उसमें। पहली चीज तो ये है कि डाउन सिंड्रोम के लिए आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट क्यूरेबल, राइट? इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। सेकंड चीज ये है कि डाउन सिंड्रोम के कारण कोई और प्रॉब्लम हो, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे हार्ट में होल होता है, सो हार्ट में होल डाउन सिंड्रोम के कारण ये नहीं होता। डाउन सिंड्रोम में ये नंबर ज्यादा होता है। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि डाउन सिंड्रोम का कोई हम ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे, उसका कुछ ट्रीटमेंट होता ही नहीं। अगर इंश्योरेंस कंपनी वो रिजेक्ट करती है, आप पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को बोलो, अगर इन केस हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वो लिख के देंगे आपको कि डाउन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट नहीं किया है। जैसे निमोनिया होता है, निमोनिया किसी को भी हो सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम बच्चों का कम होता है, तो वी आर एट हाई रिस्क। ओके, सो निमोनिया इज नॉट कॉज्ड बिकॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम। निमोनिया कैन हैपन टू एनीवन। हार्ट डिफेक्ट जो होता है, हार्ट में होल होता है, दैट इज वन ऑफ द बर्थ डिफेक्ट। वन ऑफ द बर्थ डिफेक्ट सेम लाइक डाउन सिंड्रोम। सो उसके लिए आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, वो इंश्योरेंस कवर होगा। ओनली थिंग यू नीड टू आस्क द डॉक्टर टू राइट दिस ट्रीटमेंट इज नॉट फॉर डाउन सिंड्रोम, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम। ओके, आदित्य जी, एक बार उसमें बात हुई थी ना, तो मेरी उसने ये बताया कि सपोज उसका मसल टोन लो है, अगर वो चलते चलते गिर गया है तो उसके वजह से कोई फ्रैक्चर आया, तो डॉक्टर्स यही लिखेंगे कि लो मसल टोन होने के। नहीं लिखेगा। अब स्टेट से नीचे गिर जाओगे तो क्या? पॉइंट ये नहीं भी हाउ वी आर अज्यूमिंग, देश के डॉक्टर्स को इतना नहीं पता है। हाउ वी आर अज्यूमिंग, दैट इज वन पार्ट, हाउ वी आर टेकिंग इट। सो बताया था कि इस तरह के केस में अगर डॉक्टर ये लिखते हैं कि लो मसल टोन हुआ तो उसकी वजह से ये हुआ, तो वो डाउन सिंड्रोम की वजह से हुआ। नहीं, गलत है, ऐसा लो मसल टोन वालों को तो फ्रैक्चर कम होगा। ऐसा नहीं होता है कि ऑफ कोर्स। सो एनीवेज, कि लो मसल टोन है इसलिए बच्चा गिर गया, नो, दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। आदित्य जी, कैन आई स्पीक? Parag, नहीं, please hold on. Parag, we have a lot of hands raised, so I would request if we can further move on to other. Actually, I have a similar problem, so I wanted to say Down syndrome child है, मेरा भी insurance हो नहीं पाया. I've tried lot of places. Okay. I'm really worried about it. Okay, so United India Insurance, Oriental Insurance, National Insurance, स्टार इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ, ये मैंने लिस्ट फॉरवर्ड किया है। में मैंने कर रखा है,
इंश्योरेंस हो गया बट मैंने डाउन सिंड्रोम बोला नहीं है, और डाउन सिंड्रोम में बोला था तो उन्होंने बोला कि नहीं डाउन सिंड्रोम का नहीं हो पाएगा, लोग इंश्योरेंस ही नहीं कर रहे। आपका स्टार में इंश्योरेंस हो गया है ना? हुआ है बट मैंने डाउन सिंड्रोम मेंशन नहीं किया उनका। दैट्स फाइन, ओके ठीक है, मतलब देयर इज नो इशू इन इट अगर आपने नहीं उसको मेंशन किया तो। Actually, Aditya, it doesn't matter that they don't mention it. It's okay. Yeah. It doesn't. You don't have to mention till they ask you if there is a particular condition. We are all getting insurance by not mentioning anything. Yeah. So please go ahead and get it. Aditya, make it very clear that if there are parents who need immediate care or attention for any type of surgeries, to write to the federation for the time being, because if you wait, then the child is at risk. So wherever there is a risk, write to us. We are supporting them. We will give the financial support for the parent when the letter comes from the hospital. Because if you keep waiting, the insurance does not cover. One. Second, if there are people who can't afford any of the tests or the what do you call them, the medical treatment, we are available. Please write to us. These two things make it very clear, because if they keep waiting, and yes, Aditya, lots of parents are getting corporate insurance. Yes, so I got a call from a lot of people that they got corporate insurance. Corporate insurance is covered, definitely. So the problem is, yeah, exactly. We are telling this is the medical condition. Are you covering? They are not sure. So they're saying, no, it's not covered, because insurance, they are looking for the loopholes. If they identified, no, it's not a part of it, so they will say, no, we are not going to cover. Because see, हम लोग आगे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमारा तो मेडिकल कंडीशन है, उन्हें नहीं पता डाउन सिंड्रोम क्या होता है, उन्हें नहीं पता कि डाउन सिंड्रोम का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, उन्हें नहीं पता कि डाउन सिंड्रोम के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. So point is कि they assume कि अब अगर डाउन सिंड्रोम है मतलब इनको तो डेफिनेटली लगेगा, इसलिए इंश्योरेंस करा रहे हैं. No, but what is your problem if you get the insurance without telling it? क्योंकि आप उसमें फिर वो आपका रिजेक्ट कर देंगे ना, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है. आपका रिजेक्ट हुआ, आपने अप्लाई किया तो नहीं है, बट एजेंट से बात तो अज्यूम नहीं करेंगे हम. That's what the problem is कि हम अज्यूम करते हैं. ठीक है. So please stop assuming it. जो डायरेक्शन है उसी में जाओ. देखो बच्चे को मेडिकल कंडीशन है, हमें मेडिकल कंडीशन नहीं है. यूज योर ब्रेन्स प्लीज, डोंट टेक इट रॉन्ग, बट हमें हमारे बच्चे को कवर करना, गो फॉर इट, बिकॉज डाउन सिंड्रोम से कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला. मैं अपने बच्चे का एग्जांपल देता हूँ. 2019 नवंबर में उसको निमोनिया हुआ. इंश्योरेंस कवर मुझे मिला यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से. ओके, उन्होंने बोला कि डाउन सिंड्रोम में नहीं देंगे. मैंने डॉक्टर को बोला कैन यू प्लीज राइट कि निमोनिया इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम, और अगर आप नहीं लिखने को तैयार तो यू प्रूव इट कि इट इज बिकॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम. अरे क्वेश्चन पूछो, बोलो, ओपन अप, कम ऑन. सो डॉक्टर ने लिख के दिया इट्स नॉट बिकॉज ऑफ, दैट वाज अ कैशलेस पेमेंट. ओके, सेकंड टाइम व्हेन देयर वाज अ वेरी सीवियर बर्थ डिफेक्ट था, अनडिसेंडेंट टेस्टिस. ओके, वो रिजेक्ट कर दिया कि अनडिसेंडेंट टेस्टिस इट्स अ बर्थ डिफेक्ट, इट्स अ external anomaly, and we are not going to cover it. I fight for it. I file a grievance petition. 100% medical cover मुझे 15 days में मिला यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से. दोनों अलग अलग चीजें थी. डाउन सिंड्रोम इज बर्थ डिफेक्ट, बट अनडिसेंडेंट टेस्टिस इज अनदर बर्थ डिफेक्ट. और उसको उन्होंने बोला एक्सटर्नल कंजाइटनल एनोमली है. इंश्योरेंस कंपनी ने, आप कोई भी आप पढ़िएगा, इंश्योरेंस कंपनीज है, उनका जो डेफिनेशन होता है, जो गाइडलाइन होता है, उसमें लिखा हुआ एक्सटर्नल कंजाइटनल एनोमली इज नॉट कवर्ड, बिकॉज वो उसे कॉस्मेटिक सर्जरी मानते हैं. एक्सटर्नल कंजाइटनल मतलब जो बॉडी के बाहर होता है, आपको उसको एक्सटर्नल बोला जाता है. सो दे पुट इट एज अ कंजाइटन कॉस्मेटिक सर्जरी, तो वो कवर नहीं करते हैं. बट जब मैंने उन्हें मेडिकल टर्म में जाके प्रूव किया, मैंने उन्हें ये प्रूव किया कि आपका पूरा इंश्योरेंस का कंसेप्ट ही गलत है. जो कंजाइटनल एनोमलीज होती हैं वो इंटरनल एक्सटर्नल कभी डिफाइन ही नहीं की है मेडिकल कंडीशन में. सो जब ये मेडिकल इंश्योरेंस है और ये मेडिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड नहीं है, इट मीन्स यू आर रॉन्ग. उन्होंने एक्सेप्ट किया, 15 दिन में पूरा मुझे मेडिकल कवर मिला. So first, if it's emergency, write it to the DSFI. Get your child, पहले उसका risk जो है high risk पर है वो खत्म करो. So that is the life is important. Second thing, if you have not applied for the insurance, go and apply for insurance. Don't say कि भाई डाउन सिंड्रोम है तो एजेंट को नहीं पता. एजेंट मेडिकल पर्सन नहीं, हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि एजेंट, अरे हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स को नहीं पता है व्हाट इज डाउन सिंड्रोम. दे डोंट नो, दे नो ओनली द थियोरेटिकल नॉलेज, नॉट द प्रैक्टिकल नॉलेज. दे डोंट नो अबाउट देयर लाइफ, व्हाट दे कैन डू, देयर इंटरेस्ट, देयर स्किल्स, देयर अचीवमेंट्स. सो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो एजेंट जिसका क्वालिफिकेशन भी नहीं हमें पता है और ही विल नो एंड ही विल डिसाइड कि इंश्योरेंस देना है या नहीं देना है.
Yes, Aditya, we have some more hands raised. I will request Mithun ji if you can unmute and also switch on your video and ask your question, please. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. मेरे पास स्टार हेल्थ का 5 लाख का इंश्योरेंस है, उसका सवाल का मुझे जवाब मिल चुका है और मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो ग्लोबल डिले डेवलपमेंट डिले है वो निरामय में कवर होता है कि नहीं होता है? और एक सवाल है मेरा, स्कीम है सारी, अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इट मींस कि वो निरामय में कवर है क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कीम है। ओके। एंड सर, मैंने यूडीआईडी की कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट मैंने ऑफिशियल अथॉरिटी से बात भी किया था। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ शायद उन लोगों का कुछ इश्यूज है, तो उसके वजह से वो लोग अप्रूव नहीं कर रहा है। इन दैट रिगार्ड मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए? आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है? हाँ जी, ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। नंबर आ गया आपको, मैसेज आया, मैसेज आ गया ट्रैकिंग का। एनरोलमेंट नंबर है मेरे पास। ओके, तो वो आ जाएगा आपका, मतलब डोंट गेट पैनिक फॉर दिस, आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगा आपके, क्योंकि वो ट्रैकिंग नंबर है तो उसके बेसिस पे हम उसे चेस कर सकते हैं। आई विल गाइड यू। ओके, देखो अभी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अभी विद इन अ मंथ बना है, ठीक है ना? अभी क्या 15 दिन ही हुए होंगे, उसके बाद अपनी यूडीआईडी करा, तो यूडीआईडी को 2-3 महीना लगेगा, इट विल टेक टाइम, बट आपको मिल जाएगा। ट्रैकिंग नंबर आ गया, वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे चेस करेंगे हम और यू विल गेट इट, डोंट वरी। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कॉल करिएगा, आई विल गाइड यू कि आपको कहाँ किसे लिखना है। तो अभी आपको किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, दिल्ली नहीं जाना है, ना वेस्ट बंगाल में किसी को करना है, क्योंकि रिसेंटली यू हैव अप्लाइड, राइट? ओके जी, ओके, थैंक यू सर। थोड़ा टाइम दीजिए, हो जाएगा आपका। ओके जी, थैंक यू सर। I would request P. Sajan Raj Jain ji, please unmute yourself and if you can switch on your video and ask your question. Yeah, hi, can you hear me? Yeah. Yes, so मैं बैंगलोर में रहता हूँ और मेरा बच्चा डाउन सिंड्रोम से डायग्नोसिस है, तो मैंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया है, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है, 5 साल में एक्सपायर हो जाता है, तो क्या ये साइट से मैं वो भी रिन्यू कर सकता हूँ? साइट से रिन्यू नहीं होगा, वो साइट से आपको आई बिलीव अपॉइंटमेंट मिलेगा उसमें कि कब आपको जाना है, और देन बिकॉज वो फिर से असेसमेंट होगा उसका, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको मिल जाएगा। सो डाउन सिंड्रोम में देखो कोई चेंजेस तो होना नहीं है, कटेगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड दे विल मार्क इट एज अ डाउन सिंड्रोम। आईक्यू दे मे चेक कि अगर आईक्यू में चेंज हुआ तो, अदरवाइज देयर इज नो चेंज एंड वेरी इजीली रिन्यू हो जाएगा। Okay, so I'll get the list of centers where to go from this site. Correct. So you can select which is nearby and easily accessible for you. Okay. Thank you. Aditya, I have a quick question, same topic. I have a disability certificate issued in 2016 at the age 6 year. Is it still valid, or because there Excuse me, please mention your name, please, sir. Where are you? We can't see you. Yeah, so this is Vijay Yati's father. We have disability certificate issued from the Delhi, and which year it got issued? 2016. They must have mentioned which month, because see, the Right of Person with Disability Act, it implemented in end of 2016. So if it's in mid of May or starting of 2016, so it should be permanent. So what they mentioned P or permanent. It is 3/4/2016. So April month it was made. Right. So somebody, there must be a checklist, or they put it as right on permanent or permanent P or permanent some. It must be mentioned there. I think they have not mentioned anything here. No, it must be mentioned. I think it's a handwritten. I have Institute of Human Behavior and Allied Science. This is issued from there, Dilsad Garden. It should be permanent because the Right of a Person with Disability Act came in mid of 2016 and implemented after 3-4 months. Okay, but you can get it checked. So did you get the UDID? I'm just applying the UID. I am just submitting right now. Apply for UDID. Apply for UDID. Okay. Yeah. So they will let you know when you visit a center. Okay. Thank you. Ideally, it should be permanent. Thank you. So disability certificates are now kind of permanent? No. So see, now they are giving you for the new child, it's like for 5 years, and they will renew it after 5 years, and after age of 18 they will make it as permanent. Okay. Can I request Molly to unmute yourself and switch on your video and ask?
हेलो यस सर, निरामया जो इंश्योरेंस है ये ऑनलाइन हो जाता है क्या सर? हाँ, इसके लिए आपको नेशनल ट्रस्ट का वेबसाइट जाएगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई कैन शेयर, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, तो वो आप रीड करिएगा डॉक्यूमेंट एंड यू कैन अप्लाई फॉर इट। सर मैंने वो इंश्योरेंस ऑनलाइन सबमिट तो किया है, लेकिन वापस मुझे कुछ ओटीपी या ऐसा कुछ मिला नहीं है, तो वो सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है? इंश्योरेंस या यूडीआईडी? इंश्योरेंस निरामया इंश्योरेंस। अच्छा, निरामया इंश्योरेंस आपने कहाँ सबमिट किया है? सर बिलासपुर में है, तो यहाँ पे जो लोकल एनजीओ है वो तो बोलते हैं हम ये करेंगे ही नहीं, तो रायपुर अच्छा, से आपको रिन्यूअल कराना होगा, करेक्ट? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम बनाना है। ओके, फर्स्ट टाइम बनाना है। सो कौन से स्टेट में है आप? बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर में एक काम करिए, आप सामाजिक कल्याण विभाग होगा कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ जाइए। तो निरामया इंश्योरेंस के लिए इनिशियली कुछ एनजीओस हैं जिनका नेशनल ट्रस्ट के जो पार्ट है, सो दे हैव टेकन अ रिस्पांसिबिलिटी कि ये इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर कराने का पेरेंट्स को। सर हम गए थे वहाँ पे, लेकिन वो बोलते कि हम ये इंश्योरेंस नहीं करते हैं। बिलासपुर में जो एक एनजीओ है ना, नहीं, सामाजिक कल्याण विभाग के पास जाइए। हाँ। सामाजिक कल्याण विभाग आपके कलेक्टर ऑफिस में होगा, सामाजिक कल्याण विभाग। तो आप वो नहीं कर रहे होंगे तो किसी और को दिया होगा, दे विल हेल्प यू टू डू द रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन नहीं होता सर ये? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अभी नहीं है। इसका ये हो जाता है, वंस आपका एप्लीकेशन आईडी बन जाता है देन आप इसको रिन्यूअल करा सकते हो, और टू रिन्यूअल ऑप्शन अवेलेबल है। मैं लिंक कर देता हूँ, एक बार आप कलेक्टर ऑफिस में विजिट कर लीजिए, आपको बता देंगे कि इनिशियल आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराना है आपको। अच्छा जी सर, मैंने दिल्ली से बात की थी, तो वो बोले कि बिलासपुर में नहीं कर रहे, तो रायपुर से ऑनलाइन दिए थे मेरे को फॉर्म एक, वो सबमिट किया, लेकिन उसका कुछ आया नहीं मुझको वापस। कहाँ सबमिट किया था आपने? ऑनलाइन ही सबमिट नहीं, किया था। ऑनलाइन कहाँ, कौन सी वेबसाइट पर? सर एक लिंक भेजी थी मुझे, रायपुर सिम्मी करके, सिम्मी श्रीवास्तव मैम ने भेजी थी एक लिंक, उसमें सबमिट किया था। आप वो शेयर कीजिएगा, वो चेक कर लेते हैं कि कौन सी नेशनल ट्रस्ट की थी लिंक। नेशनल ट्रस्ट की। ओके, तो ये लिंक मैंने आपको भेजा है, आप एक बार बताइएगा। और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वाले डेफिनेटली आपको वहाँ पे मदद करेंगे, बिकॉज उनका काम ही यही है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना, यूडीआईडी के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है स्पेशल नीड बच्चों के लिए, सो दैट इज देयर वर्क। एक बार आप विजिट करके आइए। ओके, सर क्या है सर, यहाँ पे हम लोग एकदम साफ मना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम। अरे आप कलेक्टर ऑफिस गए थे, सामाजिक कल्याण विभाग? नहीं, वहाँ जाके आइए ना। ओके सर, थैंक यू सर। Yeah. So the discussion is going good, and one announcement I have to make one more time. Aditya is repeatedly telling us, Rekha is repeatedly telling us that if your child who has a diagnosis of trisomy 21 at DS has an immediate medical condition and you have financial constraint, please write to Down Syndrome Federation of India. They are ready to provide every type of financial aid, even if it is for the medicines or therapies. Rekha is saying that DSFI is ready and already supporting a lot of families for those in those aspects also. So if you have bills and you want to have you need financial support, you can write to DSFI. You can contact Brinda, you can contact Parul, you can contact Rekha, and you can write to DSFI. They will be all out to support you, but do not delay any medical condition or any medical immediate need of any surgery or anything. So that was the announcement I have to make. I can see one hand raising. I can't read the name of a person. It's just written iPhone. Sir, I'm giving you a spotlight, additional spotlight. If you can unmute yourself and ask question. Good evening. Myself, Mr. Panjwani. I am from Mumbai. My son is Down syndrome, age 14 years. I have taken his disability certificate in 2017, which was valid for 5 years. Later on, when the UDID concept came in 2019, I believe, I had applied. So they gave me again a fresh disability certificate, but the date was 2017. But in UDID, the character P is mentioned. That is permanent. So do I need to get the disability certificate every 5 years? No, not required. Now the UDID will work.
You don't need a disability certificate. One more thing, sir. I'm working for a nationalized bank. So I was covered under corporate policy, where in the policy it was mentioned that all genetic disorders will be covered under this policy. I was taking his physiotherapy and speech therapy. When I filed this one claim with you, with the insurance company, they rejected it. So I would just bring it to the notice of all the parents that then I have approached to the office of Chief Commissioner for Person with Disabilities. It is a court which is located in Delhi. And the response was very prompt from them. And in 2 or 3 hearings, I just got my claim settled against the insurance companies. So they are very helpful. And the Ministry of Women and Child was very helpful in settling the case in favor of me. Thank you for sharing. Yeah, it will be helpful. So that's what I am requesting. Forms your heart to hear the positive. That's what we are telling parents to explore the opportunities, explore the options. Yeah. Don't rely on others. In fact, sir, there was a ruling from Delhi High Court that all genetic disorders shall be included in the policy. You cannot exclude them. The message I shared, you can read that message. So that link is also there, which has the judgment and the statement given by the High Court and Supreme Court that of course all special needs should be covered despite of the genetic or physical. That should be a part of insurance. The same link I have shared. Yes. Yeah. And thank you, Anil sir, for responding on the chat. So, ma'am, you can read the message about the Niramaya, initially where to go and in the Delhi to whom you need to contact. Okay, so please. I have the email address and contact number. So where do I share this? Please put it in the chat so the parents can be aware of it. Put it in the chat. Yeah. Thank you. Thank you. Yes, Mr. Joshi is also clarifying on Nirmaya. He's saying they can also, he's mentioned the names also for to whom they can write in National Trust. So we have Suma raising hand. Suma, can you unmute yourself, switch on your video and ask? Hello, I'm Satish, Suma's husband. I have a daughter with a global. Hi, I have a daughter with a global development delay. She's aged 23 now. I had applied for the UDID card in last July. The status still on the website still shows application has been submitted. So should I need to go contact somebody further or? Yes, so on Solomon website, you can see there is an option called Contact Us. So you can put your query there. And also you can find the email address as well. Okay, so you can write it to them. I can show on my screen. Okay, so some follow-up is required for, and then what should I do? Go somewhere or? On this, no, you don't have to go anywhere. You just go to the this website, Solomon website. There's an option called Contact Us, and then this option. Okay, so contact us. You can submit your query here, and of course you can write on this email ID as well. And yes, so they are not good in responding promptly. So you have to send few follow-up, but yes, somebody, some official or someone will get back to you, and or your status will be moved by either UDID or they will call you. Okay, so just try this option, contact us. Okay, so normally it is a soft copy that you get ultimately, or? See, there are both the things, the hard copy and a soft copy, but once it's available, you can download from here. So download e-disability certificate and e-UDID card. So you can download from here. Yes. Okay, thank you. One more question I have. It is regarding Niramaya. Can that be renewed online? Yes, so Niramaya is renewed online here on the National Trust website. So on the National Trust website, you can go, put the application ID and submit it. So click here the renewal process for individuals. So you can do that. Yeah. Okay, understood. Thank you very much. That's all. Thank you. आदित्य जी, अगर निरामय कराना हो तो अपने आसपास की किसी एनजीओ को हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे? सी देखिए कुछ जो एनजीओ है, आई बिलीव मोस्ट जिनका नेशनल ट्रस्ट के साथ टाई अप है, सो इनिशियली वही लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे. लेटर ऑन आई बिलीव फ्रॉम लास्ट 2 years ये फैसिलिटी अवेलेबल है ऑनलाइन रिन्यूअल का. सो to find the detail, we can ask request National Trust if they can put it the information on the website, because centralized information is not available. Okay, कि initial registration कहाँ पे होगा. So only thing, the best way for अगर किसी को कुछ queries है for special need बच्चों से related, तो that is the सामाजिक कल्याण विभाग जो कलेक्टर ऑफिस में होता है. हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ऑफिस होगा, वहाँ पे there will be officer and you can go ask for the information.
वहां से एनजीओ के बारे में राइट, क्योंकि दे नो कि किसके साथ टाई अप हुआ, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कर रहा है, हार्डली 1 या 2 ही होते हैं। एंड आई बिलीव अनिल सर ने रिस्पॉन्ड भी किया है कि नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है लिस्ट ऑफ आरओस, registered organization state wise it is available. So Aditya is saying go to the district administrative office and there will be Department of Social Justice, right Aditya, where you have to go. Right. Yes, Samajik Kalyan Vibhag, right. Yeah, Samajik Kalyan Vibhag. So there you have to go. Yeah, we have some information coming. So yes, it is difficult to get insurance, but I think you have to follow up because you need it as a parent. Aditya, what will you say that if the spirit of a parent is gets down when they are already facing a lot of challenges, and applying for one more thing create more challenges, right? So the spirit goes down. So what would you say to the parents to encourage to go for these things, because ultimately they are going to benefit them? See, these are not the challenges. I see there are 2 things how you look at the things. If you see as challenges, if you see as difficulty, then of course psychologically you are creating problem for yourself. It's better just we need to explore it, simple. And insurance cover, in fact, even for the typical person, it's not easy to claim. Okay, so why we are considering for our kids it's not possible, why we are telling them that no, I have Down syndrome, now you let me know it is possible or not. So we are questioning them and they don't have the answer. So the simple thing is no, the simple answer is no. So it's जब अथॉरिटी किसी को देंगे तो वो ज्यादातर नो ही कहता है, तो राइट, क्योंकि वी आर क्वेश्चनिंग देम, अच्छा आप करते हो क्या, डाउन सिंड्रोम इंक्लूडेड है क्या, उन्हें तो इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, right? And then we accept it, and then we come in the conclusion that just because of Down syndrome, just because of special needs, it's not available. So for me, for the corporate insurance, by default it is cover for 5 lakh. For corporate I don't have to pay any renewal charges for it. I have taken additional because of COVID, so 6 lakhs rupees additional I have taken insurance, top up बोलते हैं जिसे, so I have to pay around 6,000 rupees for that. That's it for 6 lakh rupees. So total insurance cover for my family is 11 lakh rupees. So 11 lakh एक ही इंसान को लग जाए या पूरी फैमिली को लगे वो 11 लाख रुपए साल का. So that's a huge amount, and I have to pay only 6,000, 5,800, even not the 6,000, 5,800 rupees for that. And 5 lakh I don't have to pay anything because it's a corporate insurance, and in corporate insurance it's easily claim होता है, उसमें कोई problem नहीं आता है. Sometimes there are few questions like for the birth defects. So there is an insurance clause even for the typical children that if it's a birth defect, so until the age of 2 they will not cover. So that is not because of Down syndrome कि उन्होंने reject किया, that is because of the birth defect. We need to understand what are birth defects as well. Down syndrome is also one of the birth defect. Heart issue is also one of the birth defect. Undescendant test is also one of the birth defect. There may be many more. So we need to understand that as well. So the birth defect, there is a cooling period of 2 years. If immediate surgery required, तो मना करते. But in the most of the heart surgeries in the corporate insurance, they are covering those. Right, and if you can question, the rightly said by one of the parent, like for the therapies also, they have claimed and they are getting it. Simple. So he explored the option. We also need to explore the option instead of saying नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा because of Down syndrome. यानी कि this is not the problem. कोई hard and fast ऐसे रूल नहीं है, आप जाके बात करेंगे, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं वहाँ पर. See, claim के time पे there are common protocols at the time of claim, but not at the time of registration. And see, we need to also understand, हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि there is no treatment for Down syndrome. So we are not claiming anything which is a treatment of a Down syndrome. There is no other health issue that is just because of a Down syndrome. It is happening. वो जो दूसरी problems है उनके chances ज़्यादा हैं, but Down syndrome के कारण ये जरूरी नहीं है. So there are 2 different things. I totally agree with Aditya. I just wanted to share my experience. Recently, I applied for. Who is this? Please mention your name, please. We can't see you. Yeah, this is Vijay again. Yati father. Yati father. So अभी ICICI Lombard से हमने apply किया था. We were having the 3 members enroll, and only the Yati was not included into this personal insurance. So I wanted to specify that she is the DS child and wanted to enroll her as well. So they initially declined. So I strongly push them, why you are declining, what are the basis of this?
So after a lot of follow-up, around 2 months, I've given all the documents, everything, and finally they accepted. So we need to basically, there is no clause like Aditya mentioned. We should persuade and they will give you the normal insurance also for our kids. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और आदित्य जी, जैसे कि बार बार कहते हैं कि डिसेबिलिटी आपके बच्चे को है, आपको नहीं है, तो वहां से निकलिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके लिए। बहुत ही आसान है, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो हम उसके लिए कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और समीक्षा, मेरे ख्याल से आज का सेशन हमारा खत्म होने की तरफ आ गया है। और जाते जाते मैं दिखा दूं, आनंद बार बार दिखा रहे हैं अपने यूडीआईडी कार्ड, तो मैं उन्हें स्पॉटलाइट दे रही हूँ। आनंद दिखाइए, आप अपने जो कार्ड दिखाना चाह रहे हैं दिखाइए, देखिए अपना कार्ड उनके पास है, कितनी खुशी है उन्हें अपनी एक आइडेंटिटी हाथ में लेके दिखाने। And on P, that is for permanent. जो P mention है, that is for permanent. You don't have to renew this. Yeah. Congratulations, Anand. Congratulations, Anand. So it has been a very informative session in terms of knowing about the UDID and insurance policies and insurance options available for our children and for us. So the only the takeaway for me is that parents keep following up, keep applying and keep following up, and keep fine tuning your journey by contacting Aditya, knowing, you know, the procedure correctly, knowing what else can be done. Once it's, you know, there is always a lane where you have to see and find more options. So please do not take this thing as a lightly, in the sense that okay, nahi hai to koi baat nahi, I can still manage. Please pursue things, because that opens up the mindset of the people also who are involved in the other organizations and are coming to, you know, building awareness also in society. So thank you so much, Aditya, for sharing all, for, you know, being available for the time, because you are very busy. We know that you keep traveling also. We have to delay this session also because of you not being available to us. Thank you so much for patiently answering all the questions. And yes, like you always say, that you are available for you know, parents to contact him personally if they have any specific problem to discuss with Aditya. Thank you so much. Yeah, thank you, and thank you for organizing. Thank you. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर आने के लिए और इस सेशन में हमारे साथ रहने के लिए। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगी, समीक्षा और आदित्य जी भी मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि पर्सन्स फर्स्ट हम कहते हैं, तो पहले हम आते हैं, पहले हमारे बच्चे आते हैं, तब उनकी जो स्टेटस है वो आता है। तो डाउन सिंड्रोम है मेरा बच्चा नहीं कहिए, वो डाउन सिंड्रोम ब्लेस्ड है या डाउन सिंड्रोम डायग्नोस्ड है, ऐसा कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो डाउन सिंड्रोम से स्टार्ट उसको मत कीजिए, वो डाउन सिंड्रोम नहीं है। एंड कुछ पेरेंट्स अपनी एक्सेप्टेंस में यही तक पहुंच पाते हैं कि वो कहते हैं कि डेवलपमेंटल डिलेड है, सिर्फ डेवलपमेंटल डिलेड नहीं है, अगर डाउन सिंड्रोम डायग्नोज हुआ है तो वो डाउन सिंड्रोम ही है, फिर उस पे आगे जाके हम काम करें तो अच्छी बात है। तो इस टर्मिनोलॉजी को, ये भी अवेयरनेस की एक बड़ी चीज है, इसे हमें सबसे पहले प्रैक्टिस करना होगा, देन फिर हमें समाज को भी बताना होगा कि हमारे साथ